Hello everyone, welcome back. And the next topic, which is motion, we are going to start very soon. So this motion, the study of motion. The study of motion, or say the branch that deals with the study of motion. The branch that deals with the study of motion, okay, which is called, what we call it? We call it as mechanics. What we call it? We call it as mechanics. मोशन को जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में, उसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। फर्दर मैकेनिक्स को हमने तीन पार्ट्स में हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। तीन पार्ट्स में हम लोग मैकेनिक्स को इटसेल्फ वी स्टडी इट इन थ्री पार्ट्स। एंड व्हाट आर दोस थ्री पार्ट्स? फर्स्ट इज when object when in rest, sorry, it is called static. I am really sorry, static. This is called static, and this is called, another one is called kinematics, and the next which we study is dynamics. Static, kinematics, dynamics. So in static we study about object at rest, and object is under equilibrium condition. So when object is under equilibrium condition, we study it in statics. Now what we study in kinematic? About motion without considering the cause. I will explain each and every part in detail, so be patient and just listen it very carefully. About motion without considering the cause. And here about motion considering the cause. Okay, so this is static, this is kinematics, this is dynamics. In static we study about object at rest. When object is under equilibrium condition, we study in static. जब object rest पे होता है, जब स्थिर होता है object, और उस पे जो फोर्स लग रहा होता है वो जीरो होता है दोनों साइड से, वो हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स में। काइनेमेटिक्स में हम मोशन को ही पढ़ते हैं, बट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज, विदाउट कंसिडरिंग द एक्चुअल कॉज ऑफ द मोशन. Dynamics, in dynamics we study about motion considering the cause. Okay, so tell me what we are studying now. The chapter we are studying now, is it is a static or kinematics or dynamics? Okay, so let me tell you that the part which we are studying is actually kinematic and a little bit of static. Okay, but finally we are just studying kinematics only kinematics, nothing else. Okay, now I am running this out. Now we will come to know about motion and rest. Yes, you will be, this video will be a bit long, I am saying it. So the topic is motion. What is motion? What is actually a motion? Is a body or a particle is said to be in motion when
it changes its position with respect to time. Whenever with respect to time and its surrounding, this is very important to mention it. Okay, so a particle is said to be in motion when it changes its position with respect to time and its surrounding. If it changes its position with respect to time and its surrounding, then it is termed as motion. Now this is the motion. Now rest. What is rest? Rest, a body or say a particle is said to be in to be at rest when it does not changes its position with respect to time and its surroundings. Okay. Now what is the meaning? What is the meaning behind this? See, a body or a particle is said to be in motion when it changes its position with respect to time. How we can study? How we can actually know about motion and rest? Now listen very carefully. Consider you are sitting at your home. Okay. Now you saw a bus crossing by your house. Now what you are seeing? You are seeing that you are at rest, but that bus is moving. But if that bus was at rest, it would be seen by you as at rest. ठीक है? अगर वो बस चल रहा होता, if it was moving, then definitely उसके लिए तुम भी मोशन में होगे. For example, one of your friend sitting in that bus sees you, he must उसके लिए आप भी जरूर मोशन में होंगे ही होंगे. Okay, so whenever you are in motion, you see everybody in motion. अगर एक बंदा चेयर पे भी बैठा है, अगर आप दौड़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि आपके साथ वो पीछे जा रहा है. He is also in motion. Okay, so what we hear from, we conclude that an object is said to be in motion or at rest by the frame of reference. देखने का तरीका अलग अलग हो सकता है. जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, this is earth, we all know. In actual, this earth is at rest according to me because I am at rest. But when I go to space, or when I go to any other planet, or from space when I see it, it actually looks different. It actually feels that earth is rotating. So everything depends upon your frame of reference. Okay, अगर कोई object at the same time rest में भी हो सकता है, at the same time motion में भी हो सकता है. Okay, it only depends upon the frame of reference. And अगर motion है, motion और rest क्या है? ये relative terms है, ये vary कर सकते हैं. ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ वेरी कर सकते हैं. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? देखिए, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये क्या है? एक मेरा फ्रेम है. मैं इस फ्रेम से, मैं किसी नजर से आपको देख रहा हूँ, उसी नजर को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिजिक्स के लैंग्वेज में. ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली हेल्प अस टू नो अबाउट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज अंडर रेस्ट और अंडर मोशन. ओके, सो राइट अ नोट हियर. नोट डालो दैट मोशन and rest are relative terms. Motion and rest are relative terms. At the same time, a body can be at rest and can be at motion depending upon the frame of reference of a person. Okay, now I think it's very clear. If you're having any doubt, please let us know in the comments. Okay, now moving further, we will discuss about distance and displacement. Sorry, scalar and vector quantities. Okay, so what we are going to study here is
scalar and vector quantity. Okay, what is scalar quantity? What is scalar quantity? अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? हैविंग ओनली magnitude. Okay, so quantity which has only magnitude. Magnitude means समझ नहीं आता किसी को. Magnitude means actually value which has only value. Okay, but no definite direction. No definite direction. And I am going to explain scalar and vector in a bit detail as well. Okay, what are its example? For example, you can take volume, length, sorry, not length, distance. Yes, distance, speed, and current. Okay, let us I will discuss a case of current as well. Okay, so I am not writing current right now. You know that it's a scalar, but I will discuss current in somewhat detail. Let us, or there are many, work, etc. There are many scalar quantities. Now coming to vector quantities, just opposite to that of a scalar quantity. Vector quantity having magnitude as well as a definite direction. Okay, so a vector quantity is that kind of quantity which has magnitude as well as direction, जिसका वैल्यू भी हो और जिसकी डायरेक्शन भी हो. ठीक है, कैसे? तो इसका एग्जांपल क्या होता है हमारे पास? इसका एग्जांपल हम सिंपल सा ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट. बहुत ही अच्छा एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट. पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब पढ़ेंगे अभी. डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, sorry, not speed, I'm really sorry, this will be velocity, acceleration, many more. Okay, scalar quantities, vector quantities, what is the difference we have saw? Now tell me, current is what kind of quantity and pressure is what kind of quantity? Tell me one thing. Is current a scalar quantity or it's a vector? Or a pressure is a scalar quantity or it's a vector? Tell me one thing. Pause it once and try to answer by yourself. And I think majority of you would have thought that current is actually a vector quantity. बहुत लोगों ने सोचा होगा कि करंट भाई उसका तो डायरेक्शन भी होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, उसका एक डायरेक्शन है अपना, तो पक्का ही पक्का वेक्टर क्वांटिटी होगा. बट इट्स नॉट अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर. ये एक स्केलर. तो अब इसका रीजन क्या है कि ये स्केलर क्यों है? क्योंकि वेक्टर्स के कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, वेक्टर को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी तभी बोलते हैं, ये दो ही पैरामीटर्स नहीं होने चाहिए, इसके अलावा और भी पैरामीटर्स हैं. ये देखिए, ये एक्चुअली हमारे सिलेबस का अभी नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा सा. वेक्टर क्वांटिटी की एक और हम चीज पढ़ते हैं कि जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता हो. ठीक है, वेक्टर एडिशन लॉ क्या है? देखो, वेक्टर जैसे हम लोग करते हैं ना फ्रैक्शन का ऐड, वैसे वेक्टर का ऐड होता है. ठीक है, तो वेक्टर के एडिशन में ये कहा जाता है कि जो वेक्टर एडिशन को फुलफिल करे, ठीक है, वही होता है वेक्टर क्वांटिटी. तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारे वेक्टर लॉज को ओबे करते हैं, वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे करते हैं. बट करंट डज नॉट ओबे वेक्टर. सो नोट, current is
scalar quantity. Okay, because it has direction, right? Yet it has direction, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन फिर भी उसके पास डायरेक्शन होता है, but does not obey vector addition लॉ, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। प्रेशर क्या है? प्रेशर का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, जो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हमारा तो एक वेक्टर होता है, तो जनरली अगर एक क्वांटिटी में हमें एक वेक्टर मिल जाता है तो हम सीधे से कह देते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी, बट ऐसा नहीं है। प्रेशर क्या है? प्रेशर भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी ही है। स्केलर क्यों है प्रेशर? हम इसको फ्लूइड मैकेनिक्स, जो हमारा फ्लूइड वाला चैप्टर है ग्रेविटेशन में, उसको हम अच्छे से बताएंगे आपको। अभी ये थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके, सो in this particular video we have discussed about motion and rest, scalar and vector quantities, and I think this is enough to understand the basic concept. And one more thing, that whenever you want to specify that a quantity is a vector, then do one thing, just put an arrow on it. For example, force, mass and acceleration. Okay, so force is a vector quantity, so we just represent an arrow with it. Acceleration is also a vector quantity, बस एक arrow से हम represent कर देते हैं। Okay, so this was all about scalars and vector, motion and rest in this particular video. In the next video we will discuss the speed and velocity, and then we will be practicing some questions based on these four topics, that is distance, displacement, speed and velocity. Okay, till then, goodbye.